Yes, Assalamu alaikum everyone. Welcome to this new session. Today we are going to talk about artificial intelligence. This is a new topic and it's quite exciting, especially since last few years. It has really grown in popularity and application and utility. So we'll talk about that. All right, so today we'll be looking at some of the basic concepts or fundamental concepts that are used in this area of computer science called artificial intelligence. So before I proceed to my next slide, is there anyone who can give me a kind of a description or a one line definition of what is artificial intelligence? It's machine making decisions based on data. Right. Yeah, that's true. So both of these are correct descriptions. However, they're a bit general because most of the computing is like that. So we'll try to distinguish a little bit more. It is very hard to define artificial intelligence. Not many people, actually not many scientists, researchers so far have been able to define it precisely. And the reason for that is that the term intelligence itself is very hard to define. So there's no consensus at a very high level of what constitutes intelligence, because it seems like there's a shifting boundary. Things that we used to consider intelligence, the behaviors that we used to consider intelligence once, can now very easily be replicated with the help of computer. So the question arises whether it still should be treated as intelligence or not. So these kind of difficulties are there, but there is a general a consensus and an evolving idea of what artificial intelligence is. And that's the purpose of today's topic, to explore it a little bit more. Generally speaking, when when you ask this question, what is artificial intelligence? Some of the words or sentences that come to your mind are that systems, it's about systems. Artificial means we are talking about computers, right? So when I say systems, you can replace it by computers, so that think and act like humans. So um, it means they are autonomous. So when we say act like humans, we are probably talking about robots, because robots, the difference between AI and robotics is that AI is just purely the software that controls the behavior of robots. Now, robots, when they make use of AI to act like humans, they are making decisions like just now Kunal said, that computers decide for themselves what to do next. So no human is instructing them that in this situation you have to do this, but what they do is they look at the situation, look at the data, and decide for themselves, okay, this is what I should do. The very earliest forms of artificial intelligence were a long list of if and then statements. So when we used to program computers, let's say back in 1980s or 70s, and try to make them artificially intelligent, what we used to do at that time was you used to write programs with a lot of if conditions. So if this is the situation, then you do this. If this is the situation, then you do that. And the problem with that approach is that you need to write a very large number of such statements in the program. If you take this approach, that okay, I will list down all the possible situations, and then I will ask the computer to decide, okay, if this condition is met, then do this, otherwise check the next condition. It's not the case, then check the next condition, and then check the next condition. So for one thing, it becomes very ineffective, because if you have, let's say, 1 million such conditions, and you go sequentially through them, it becomes very difficult, very slow process.
And the second problem with this is that sometimes it's not possible to list down all the situations. Take example of a self-driving car, right? So self-driving car makes use of the cameras that are fitted on the car and other sensors like proximity detector and GPS and all those. So all the data is coming in to create one particular condition. So it is very difficult to write an if-then type of statement for all possible conditions that this self-driving car can encounter. For example, the car is going on a street and suddenly a cat jumps on the street. Now, if you have to write that if-then condition beforehand, then you'll have to program a lot of things like how to recognize a cat and all that, and what to do in that situation, right? So whenever a cat appears, do you always brake, or do you like try to change direction, or what? Or you try to apply both? And if you want to change direction, do you go left or do you right? So there's a lot of complications involved in that. So what we do is we take other approaches which make the system intelligent. So they start acting just like human drivers would, right? So whenever a human driver encounters a new situation, they make their own decision based on their skill and knowledge that they have. So how can we replicate that same kind of behavior in a system that is a computer system, for example, a computer system that is driving that car? So this is what artificial intelligence is about. Another way is to say that systems that think rationally. It means that, like again, you mentioned in the beginning that they make use of logic. So rationality is something that is based on logic, right? So you look at the situation and you apply your own logic and you apply your own rationality, and you decide the system decides what needs to be done or what action needs to be taken at that particular time, what decision needs to be taken at that particular time. So this is how we generally describe AI. But like I said before, it is not possible to give a very crisp one-sentence definition. Like I have used an example to kind of convey the idea of what artificial intelligence is, but I was not able to give you a one-sentence definition of, okay, this is what is artificial intelligence is. But if you want to come close to that sentence, these are some of the sentences that come to your mind, right? Systems that think and act like humans and systems that think rationally. So when we drill down on this, so what actually is, what algorithms are actually working inside, let's say, a self-driving car, right? So because self-driving car needs to make sense of the data that's coming in through all the sensors. So the sensors are in a self-driving car, for example, there are cameras, obviously, that look forward and sideways and backwards. Then there are sensors like the speed sensor, how fast the car is moving, and then the GPS sensor, which tells where the car is at a particular moment. And then it has other kind of sensors which enable the car to detect approaching objects and detect other obstructions. So all this data is coming in. So what kind of computer programs are required in order to analyze this data? And you also have to bear this in mind that this processing must be done very, very quickly. Like you cannot delay this action. Suppose some child suddenly comes in front of the car needs to apply brake instantaneously. We cannot like wait 1 second or 2 seconds or 5 seconds to analyze all the data and arrive at the conclusion, okay, that we need to make a break. So the processing needs to be performed very quickly. So what are some of the fundamental types of processings that take place in such programs? So it is interesting to know that most of them are
based on searching for the right answer, for example, or it also involves learning. Learning means that the system also tries to capture its experience. So once it encounters a situation, it somehow tries to capture that situation and what was the best decision in that situation. So it tries to remember that and make use of this next time it encounters a similar situation. So this ability of the program is called as learning. When you don't feed in all the parameters and all the if-then conditions, but you let the computer encounter a new situation, and the computer makes its own decision. Sometimes it makes the wrong decision, obviously, and sometimes it makes the correct decision. So if the learning ability is built into that system, what will happen is that whenever the computer makes a mistake, it will recognize that it's a mistake in order to not to make the same mistake again, right? And if it's not a mistake, it was something that was done correctly and it resulted in the positive outcome, then it will also memorize, okay, this is the type of decision that should be taken in similar situation. So both the positive situations and the negative decisions, they go in computer's memory in order to make use of them later on. Yeah, is there any question so far? No questions. All right. So in order to memorize these situations, and in order to perform logical operations on this kind of information, what you need to do is you need to find a way through which knowledge and reasoning and memory can be represented in a computer system. So these are the fundamental type of things that you need to do in order to write artificially intelligent programs or create artificially intelligent systems, right? So the fundamental thing is searching, and I'll show you in next few slides how actually that is implemented, and learning, what is meant by learning, and what is meant by knowledge representation and reasoning. Now, artificial intelligence or simply intelligence can also be, from a computer science perspective, it can be broadly speaking divided into two parts. One is the perception part and one is the reasoning part. So perception is very important in case of artificial intelligence because we want to make systems that interact with their environment, right? So most of the applications of AI, they interact with their environment in some way. For example, robots or self-driving cars or drones, or even more futuristic forms of systems, for example, robo-doctors or robo-lawyers or robo-players even, or robo-receptionists. So these type of systems need to perceive what is in their environment in order to react or take actions or take decisions in response to what's happening in their environment. Right. So I've been talking about self-driving cars. So perception in case of a self-driving car would be perceiving the environment, right, through cameras, through proximity detectors, through LiDARs, through GPS and other kind of sensors, speed sensors, braking sensors, and all other type of sensors that are in there. So these all these sensors combined gives the system the ability to perceive the environment. So this part is called as the perception, how to learn or understand or know what is happening around you. So it is one important part, is perception. And second part is reasoning. So reasoning is then how do you
what kind of steps you need in order to come to a decision, right? What is your what kind of logic will be used in arriving at a conclusion or arriving at a decision to make an action? What kind of reasoning, right? So that's a separate part of artificial intelligence, because perception just gives you raw data. It doesn't tell you what to do with that data. So the reasoning part tells you what to do with that data. Okay, this is the data. It's telling me this is what's happening in the environment. So this is what needs to be done. Or reasoning can be performed on any type of data, basically, not just that comes from perception, but any type of data that you feed into the system. That system can analyze that data and apply reasoning to come to a conclusion. For example, if the application is about detecting fake news, then the data that will be given to the system would be all the pieces of information and news that are coming in over the internet. And then the reasoning part will take this data. This data is not coming through sensors, but is just being fed as raw data. And the computer will use its reasoning powers to analyze this data and decide whether it should be called as fake or not, right? So there are two parts, broadly speaking, from a computer science perspective. One is the perception part, and the second one is the reasoning part. Okay, going further, there's some more terms. One of them is intelligent agents. Now, in this context of computer science, an agent is simply a device that responds to stimuli from its environment, right? It may have sensors and actuators. Actuators are basically mechanical devices that can perform mechanical action, right? So most of the time, the computers don't need actuators because they are not doing any mechanical work, right? So when you sit on your laptop doesn't move, right? It only displays images on the screen and produces sound, and it receives some input when you type in on the keyboard, but you basically provide the mechanical action of pressing on the keyboard, right? So most of the time, the computer is not performing any mechanical action. But in case of robots, for example, it's definitely a big part of moving. Self-driving car, obviously, the car has to move, go from one place to another. So you need to have an actuator there. For example, pressing on the brake pedal, you need something to physically press the brake pedal. So that's the actuator that's doing that, right? If you're talking about a robotic arm that picks up a cup, then that arm will have its own actuators, which will perform this mechanical motion of lifting the cup, right? So in case of an agent, it may have sensors, or may have actuators, or it may have none of these, right? So agent could be just simply a software device, right? Which means that, for example, if you write a program to play chess, then you don't really need sensor or actuators, unless you are making robots that are playing chess, right? That's a separate issue. But if it's just a program, then the agent would be the software program that is doing that, right? So sometimes you can create a chatbot that can have a kind of a conversation with you. So that chatbot would be called as an agent, but it would not have any sensors or actuators, but it will have this ability to interact with you through keyboard, right? So you'll type in something, it will take that input, analyze it, and provide you with an output.
Sometimes, for example, in case of smartphone, where you have things like personal assistants, they listen to what you say, right? So they require a sensor, which is a microphone in that case. And the actuator in that case would be the speaker, for example. Normally, speaker is not considered the actuator, but it's just the output device, right? Which converts the output from the chat box into sound. And that's why you hear Siri in case of Apple phones, or in case of Google Assistant, you can also talk to like Alexa or something. So these things are called as agents. And artificial intelligence is about building agents that behave intelligently. So this is another way of describing what artificial intelligence is. Artificial intelligence is about building agents that behave intelligently, which means that if you're, let's say, talking to Alexa, then if Alexa responds to you intelligently, then we'll say, okay, the program that is controlling Alexa is artificially intelligent, right? Although it's just a program that's doing that, right? So it's just making use of certain algorithms that take the input, analyze it, and produce the correct response. For example, if you ask your personal assistant, what is the time now? They will give you the correct answer, because they will understand that the question that is being asked is about time. What is the time now? And then they'll pick up that relevant data and convert that into an answer for you. All right. So next thing we will discuss is levels of intelligent behavior. Again, like I said, it's very hard to define what is intelligence, but sometimes we can distinguish between levels of intelligence, right? Okay, this is a very basic kind of intelligent behavior, and it may be quite sophisticated intelligent behavior. Okay? So on the most basic form is the reflex form, where actions are predetermined responses to the input data, which means that there is a long list of if-then conditions, and the agent just picks up the right condition and performs action accordingly. So this is also intelligent behavior in some way, because like you said before, that the decision is based on data, right? So the data is analyzed, and the agent decides which of the predetermined conditions apply on this data, and then it applies that condition. Right? So I'll give you an example. So in earliest example, when research on AI began, they thought, okay, let's make an expert system, and a doctor, an expert doctor. So what they tried to do was they tried to list down all the symptoms, and also what needs to be done after that. So for example, if the patient comes in with high temperature, if the temperature is high, then probably it's fever, and in that case, prescribe Panadol, for example. So it's a very simple statement, but if you collect a lot of such statements and combine them in various ways. So for example, if the temperature is high and the patient is feeling sick and is not hungry, then do this or prescribe this medicine. So this approach obviously didn't work out very well, because number one, it is very difficult to get the complete picture in this kind of if-then framework, because there might be a real human doctor. They look at several things and make observations, and then make use of their judgment in order to prescribe medicine, right? So if you want to replicate that in a kind of a computer, you'll have to list on a lot of such things. But you can probably use this in simpler cases. For example, if you want to play tic-tac-toe, how many of
of you have played tic-tac-toe before? Do you know this game? Okay, I'll share my screen. So it's a game like this, right? And you either put a cross or a circle in order to play this game. So Amar, you have played this game. Anyone else who has played this game? Okay, many of you, right? So some of you have played this game. Now this is a simple game, right? And do you think you can write if then type of statements to write a computer program that will play this game tic-tac-toe? Right? Do you think it would be possible to write a lot of if-then statements? For example, Sir, it won't be possible. It would require AI probably. I mean, we can obviously write it with if and then statements, but it needs to be a bit complex because there are multiple possibilities. Yeah, it is complex, definitely. But let's see what, if we take this approach, what will we have to do? So we can write something like, if player one puts a cross in cell 1, then put a circle in cell 5, right? So what I'm assuming over here is that this is cell number 1, this is 2, this is 4, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, and 9. So the player 1 put an X in cell number 1, then player 2, which is the computer, will put a 0 in cell 5, right? So in this way, we can create a long list of if-then conditions which will react to what the human player is doing, right? So after that, you will need another many more if statements, because the second move by the human player could be an X anywhere, for example, in 2 or in 3 or in 6 or 4. So for each of these different possibilities, you'll have a different if statement. So if the human player puts an X in cell 2, then do this. If the human player puts an X in cell 3, then do this, right? So you'll write all those statements. And after the second move, you'll again do this same thing for the third move, and fourth move and fifth move until the game stops, or one of the players wins, and the computer program will have to have this ability to see whether any player has won the game or it has resulted in a draw or something, right? But this kind of behavior, if you write those conditions, a lot of if-then conditions, then we'll say that you have written a program which is very basic, it displays very basic intelligence over here. It will be at the reflex level over here. Because why is it a reflex level? Because all the responses are predetermined. आपने पहले ही से बताया हुआ है कि अगर वो X फर्स्ट सेल में है तो ये करना है, अगर सेकेंड मूव में X जो है वो सेल 2 में आएगा तो ये करना है, और हर सारी कंडीशंस जो हैं वो प्री डिटरमिन्ड है उनके रिस्पॉन्सेस, इस कंडीशन में ये करना है, इस कंडीशन में ये करना है। लेकिन जब आप उसे रन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है कंप्यूटर ये इंटेलिजेंटली बिहेव कर रहा है, और अगर आप सही तरह से वो इफ देन रूल्स लिखेंगे, सो दैट एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू विन द गेम, ठीक है? जैसे कि अगर उसने कोई ह्यूमन प्लेयर ने 2x लगा दिए इन अ सेम रो, then you will tell your program to put a 0 in the third place in the same row, so that you stop human player from winning by making all 3 x's in the same row or same column or in the same diagonal. तो वो आप पहले से अगर आप उसमें प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो इंटेलिजेंटली बिहेव करेगा,
लेकिन अगर आप सारे रैंडमली लिख देंगे आंसर, अगर ये करे कुछ भी रैंडमली, तो ऑब्वियसली वो इतना फिर इंटेलिजेंट बिहेवियर नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कंप्यूटर जस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है. लेकिन अगर सो यू वांट टू मेक इट इंटेलिजेंट, देन यू विल हैव टू apply your logic and rationality when you are writing that program. तो वो लॉजिक और रैशनैलिटी तो होगी इस समय, लेकिन वो पहले से predetermined होगी. So although it's predetermined, but it will still call it intelligent if it has this logic built in, and we'll say it as the first level, the reflex level, which means that you look at the condition and see which of the responses should be activated. Now, the second level is goal seeking, in which you don't specify what to do, you just specify the general rules that, for example, if you can tell your program somehow that the computer program should try to have 3 circles in a row or in a column or in a diagonal, and should try to stop the human player from making this, right? So then the computer itself will decide, okay, at this time, what should I do? Shall I stop the human player from winning, or should I try to win myself, right? So if you do not specify all the conditions, if you don't spell them out one by one, all of them, but you just specify the general rules and you build your computer in such a way that it can apply those general rules, then we'll say that this program is at a second level of intelligent, is showing intelligent behavior at the second level, because when if you successfully deploy that program, then it will always try to win, right? So because there is a goal that is there, and computer will. So I'll tell you in the next few slides how this is possible. How is it possible for computer to do that? And basically, it will involve the search algorithm that I talked about in a previous slide, right? So over here, I said that searching is one way of producing intelligent behavior. Then you will see that when you come over here, you will have to employ searching. So what do you search for and how do you search for, right? I'll show you in the next slide that for searching, what you need to do is you need to create a space of all possibilities, and then you search through that space. The computer program searches through that space so that it goes towards a particular goal. So this type of behavior is called as goal seeking. Goal seeking behavior is termed as intelligent behavior, because we know that, okay, whatever the computer is doing in order to achieve a certain goal. So the goal has been defined, but we don't define how to get there. We let the computer search for itself and seek where is the goal. And the last level is that we'll study is learning, in which the computer also memorizes the outcomes of its endeavors. So if the computer makes mistakes, it learns from it. If it makes a good move, it finds out a strategy, it stumbles upon a way of playing a game which is very beneficial, which always produces a win, then the computer will memorize and try to apply the same strategy next time, right? So this level of behavior is called as learning level, where the computer not only seeks the goal, but also tries to gain from that experience of going through this process. So there are 2 ways in which computer can learn. It can learn how to do certain thing, and it can also learn what is the situation. So there are 2 types of knowledge, right? How to do something and learning about things. So for example, what is a star? What is a galaxy? What is the mineral? What is a mineral? What is spring water? What is a volcano? So these are all what kind of knowledge which is predicate. Okay, who is the friend of this person? So this is just what knowledge, right? So it's a predicate knowledge. It's not about how, but it's about what.
And the second type is, like I just mentioned, the type of behavior where you do something, for example, seek a goal or achieve a target. That is the how to drive a car, how to cook a meal. These are the how type of learning that can take place in an intelligent agent. So these are two types. So these are different levels of intelligence, but they all are intelligent behavior. Now this is another example which will help us in putting all these concepts that we have talked about so far in kind of a perspective. Right. So how many of you have played this game before that I'm showing you on the screen? जी आप लोगों में से किसी ने खेला है? Just raise your hand or unmute your mic and tell me ये आपको मालूम है ये क्या चीज़ स्क्रीन पे नजर आ रही है? फवाज आपने खेला हुआ ये और okay, couple of people हुमायूं ने भी खेला हुआ ये. तो हुमायूं बताइए आप बता सकते हैं क्या होता है इसमें गेम में? सर इसमें हमें बेसिकली पजल्स अरेंज करने होते हैं, लाइक इसको बॉटम 6 को जैसे बॉटम पे कर देंगे और फिर हमें इसको इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. तो ऐसे काफी सारे होते हैं. ये तो 1 2 3 वाला है. कुछ लाइक पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो उस पर हमें अरेंज करना होता है. Right, इस तरह right. का होता है. Thanks, हुमायूं. बिल्कुल सही आपने बताया कि ये इस पजल में क्या होता है कि ये टाइल्स होते हैं और ये टाइल्स को आप मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि उनको आप स्लिप डाउन कर सकते हैं. जैसे हुमायूं बता रहे थे कि 6 जो है वी कैन स्लाइड इट डाउन यहाँ पे. ठीक है. तो जब यहाँ पे ये इस वक्त यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, तो जब ये 6 नीचे आएगा तो ये यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगी और यहाँ पे 6 आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे जो है हमारे पास एम्प्टी स्पेस आ जाएगी और जब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाएगी फिर हमारे पास चॉइस होगा कि हम 5 को यहाँ पे मूव कर दें या 3 को यहाँ पे लेके आए या 6 को वापस ऊपर लेके चले. ठीक है. तो ये टायर्स होते हैं जो हम लेफ्ट राइट अप एंड डाउन स्लाइड कर सकते हैं और हमारा जो इसका गोल होता है इस वाले गेम का वही होता है कि हम ये सारे टाइल्स को एक ऑर्डर में जो है अरेंज कर दें, या अगर कोई पिक्चर है ये जिक्सा पजल टाइप की पिक्चर है तो उस पिक्चर को हम कंप्लीट कर लें. तो उसमें भी जो है हर टाइल को एक प्रॉपर प्लेस में होना पड़ता है. जैसे नंबर्स हैं इसमें 1 सबसे पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9. ठीक है. इस वक्त ये सॉल्व्ड पोजीशन में लग रहा है आपको ये गेम, लेकिन इसको अगर हम जम्बल अप कर सकते हैं तो हमें फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाएगी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो इट्स लेट्स सी कि अगर हम इसे एक रोबोट की मदद से इसको गेम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो क्या होगा. ठीक है. तो उसके लिए हमें एक ये रोबोटिक आर्म चाहिए. अब यहाँ पे देखें ये जो मशीन आपको नजर आ रही है ये रोबोट नजर आ रहा है. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. लेट्स ट्राई टू सी कि जो अभी अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं इसमें. तो यहाँ पे आप देखें कि एक कैमरा लगा हुआ है. ठीक है. तो ये कैमरा जो है ये एक सेंसर का काम कर रहा है. ठीक है. और सेंसर जो है आपको पता है उससे क्या होता है कि परसेप्शन का जो पार्ट है इंटेलिजेंस का वो हम परफॉर्म करते हैं. यानी कि अगर ये एक फिजिकल पीस हमारे पास पजल गेम हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये सामने ये जो इसके दो ये आर्म्स हैं यहाँ पे हम वो पजल प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. जो वो उसको होल्ड कर लेगा इसके बीच में, वो पजल एक्चुअली इसके बीच में आ जाएगी ये यहाँ पे इस तरह से. ठीक है. तो ये जो आर्म्स हैं उसको इस तरह से क्लच करके उसको वो होल्ड कर लेंगे टाइटली पीस को, पजल को. तो ये कैमरा जो है वो बताएगा कि इस वक्त कौन सा टाइल किस पोजीशन में है. ठीक है. वो सॉल्व पोजीशन में है या जम्बल्ड अप पोजीशन में है. ठीक है. तो ये परसेप्शन का काम है. परसेप्शन जो है वो आपको जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को या जो रोबोट है उसको बताएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है. और उसके बाद फिर जो है ना सेकंड स्टेप जो आएगा वो उसकी रीजनिंग में आएगा. ठीक है. रीजनिंग जो है वो इसको बताएगी कि अब क्या करना है, कौन से टाइल को स्लाइड करना है, ऊपर स्लाइड करना है, नीचे करना है या लेफ्ट लेना है, क्योंकि उसमें हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम एक गिवन स्टेट से हम फाइनल स्टेट में जाना चाह रहे हैं, यानी कि एक हमारे पास गोल है मौजूद और हम वो गोल सीकिंग बिहेवियर अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पे. हमें पहले से पता है कि सारे टाइल्स को हमने अरेंज करना है 1 2 3 की फॉर्म में.
और इस वक्त वो सब रैंडमली मिक्सड अप है। तो हमें पहले एक प्लान बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले ये वाला टाइल जो है इसको मूव करना है, क्योंकि अगर वो एक गैप है उसमें जो है ना नॉर्मली 3 पॉसिबिलिटीज आपकी आती है, या तो ऊपर वाला स्लाइड नीचे स्लाइड कर दें आप, या नीचे वाला टाइल जो है उसको ऊपर स्लाइड कर दें, या लेफ्ट वाला टाइल जो है उसको राइट पे स्लाइड कर दें, और अगर किसी और पोजीशन में है तो राइट वाला टाइल स्लाइड करके लेफ्ट पे लेके आए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आपने चूज करनी है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी रीजनिंग जो है वो क्या बता रही है आपको कि अच्छा ये, यानी कि जब आप ह्यूमन जब एक सॉल्व करते हैं तो वो भी पहले रीजनिंग करते हैं कि अच्छा सबसे पहले मुझे जो है ना ये इसको मूव करना चाहिए, और फिर जो है फाइनली जब वो रीजनिंग हो जाएगी हमारी, फिर ये जो हमारे पास आप देखें कि ये आर्म है, ये एक्चुएटर जो है, ये एक तो इसको ये जो नीडल सी बनी हुई है इसको अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ठीक है, और ये आगे और पीछे भी जा सकता है, और ये इस तरह से लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये काफी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जिनकी मदद से हम जो है इस आर्म को, यानी कि जो नीडल है ये उस पे पजल पे आएगी, और फिर वो टाइल्स को जो है हमने स्लाइड जहाँ पे भी कंप्यूटर प्रोग्राम ने रीजन करके बताया होगा वहीं पे हम उसको, ये जो आर्म जो है उसको स्लाइड कर देगा। तो ये वाला जो सिस्टम है आप देखें, इसमें पूरा एआई के सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, सेंसर नजर आ रहा है इसके अंदर, आपको परसेप्शन नजर आ रही है इसके अंदर, आपको रीजनिंग नजर आ रही है, गोल सीकिंग बिहेवियर नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, और इसके अंदर जो है आपको एक्चुएटर नजर आ रहा है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसके एग्जाम्पल के अंदर। सर एक्चुएटर तो ये है ना, ये जो एक बनी हुई है लंबी सी रॉड, एक्चुएटर तो हाँ, सर ये हुआ ना। ये इसके अंदर सारे ये, यानी कि जो भी डिवाइस मैकेनिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है वो एक्चुएटर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो मोटर उसको लेफ्ट राइट मूव करेगी वो भी एक एक्चुएटर ही होगा, और अप एंड ये डाउन जो मोटर तो मूव पीछे करेगी लगी वो हुई है भी ना। एक्चुएटर है, और ये सारा कंबाइंड भी एक्चुएटर है। ये सब चीज जो है उसको एक्चुएटर हम कहते हैं। The whole thing that produces mechanical motion, it can itself be made up of small actuators. For example, अगर आप एक robotic human arm बनाएंगे ना, तो आपको देखिए कि आपको हर जॉइंट के लिए एक एक्चुएटर चाहिए होगा, और फिर वो पूरा आर्म मिल के भी जो है उसको हम कहेंगे कि ये एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर जो है इट कैन बी अ कंपाउंड एक्चुएटर, उसको भी हम एक्चुएटर ही कहेंगे। तो देयर आर मेनी कंपोनेंट्स जैसे विद इन। सर एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइबॉर्ग जो होता है उसमें ऐसी बने होते हैं ना, मैकेनिकल नाम उसमें होती है बॉडी पूरी आदमी की। राइट, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साइबॉर्ग इज वन एग्जांपल, रोबोटिक एग्जांपल जिसमें इस सब की चीजें आपको नजर आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ये हम देखते हैं कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ट्रैक्स आते हैं। जो मैंने बताया था कि हमारे पास एक तो है मैकेनिकल पार्ट है जिसमें रोबोट्स वगैरह काम कर रहे हैं, एजेंट्स जो हैं वो वाकई चल रहे हैं, गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार में गाड़ी की चलाई जा रही है, ये वाला पजल जो देखा था इसमें रोबोट काम कर रहा था। और एक थियोरेटिकल ट्रैक होता है, थियोरेटिकल जो होता है वो सिर्फ रीजनिंग पे काम करता है अपने, ठीक है, उसमें आपको कोई फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ही वो डिस्प्ले कर दें बिहेवियर तो काफी है। यानी कि यही चीज जो रियल में एक अगर आप बनाएंगे आम जो कि इस पजल को कर रहा है, और इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसा बना सकते हैं, एक वीडियो गेम टाइप का बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो गेम में जो है वो कंप्यूटर टाइल स्लाइड करेगा, लेकिन वो वीडियो में करेगा, वो रियल में नहीं करेगा, बल्कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो करेगा, और आप उसके माउस से जो है आप उन टाइल्स को जंबल अप कर दें, ठीक है, ड्रैग कर दें आपको, और उसके बाद कंप्यूटर से कहेंगे सॉल्व करें तो कंप्यूटर उन्हें खुद सॉल्व करेगा। तो वो वाला ट्रैक जो है जिसमें हमें कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, सिर्फ हमने थ्योरी में काम करना है, वो वाला ट्रैक जो है वो थ्योरेटिकल ट्रैक कहलाता है। अच्छा, इसमें रोबोकप के बारे में कितने लोगों ने आपने सुना है इसमें से?
अभी तक। व्हाट इज रोबो कप? अगर आपने सुना है ये लफ्ज पहले तो कोई इसके बारे में बता सकते हैं क्या चीज है? तो रोबो कप जो है एक फुटबॉल कप है, ठीक है, लेकिन रोबोट्स खेलते हैं ये वाला कप। जैसे कि नॉर्मल टूर्नामेंट होते हैं ना फुटबॉल का, पूरी दुनिया से टीमें आती हैं, वो compete करती हैं, फिर वो फुटबॉल जीत जाती है एक टीम। वर्ल्ड कप होता है इसका। इसी तरह रोबो कप भी एक हकीकत में ये टूर्नामेंट होता है जिसमें पूरी दुनिया से टीम्स आती हैं और वो compete करती हैं और उनके रोबोट्स खेलते हैं, इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस रोबोट्स खेलते हैं और रोबोट्स जो हैं वो करते हैं। तो इंटरेस्टिंगली इन द पास्ट जो है IBA ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया इस रोबो कप में, और IBA जो है वर्ल्ड में नंबर 5 तक आ गया था, ठीक है। उसके बाद से हमारा वो ड्रॉप हो गया रिसर्च का एरिया, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम वी मेड बिग प्रोग्रेस। So I will show you a video of IBA playing that in that cup tournament. फुटबॉल खेलने वाले रोबोट्स का आलमी मेला। 40 ममालिक की टीम्स तुर्की में आमने सामने और पाकिस्तानी टीम भी मैदान में, जिसने मुतादिद बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देने के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। टिपिकली ये होता है कि टीमों को 2 साल वेट करना पड़ता है वर्ल्ड कप खेलने से पहले। तो हमारी अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हम फर्स्ट ईयर हमने क्वालिफाई कर लिया और पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड कप रोबो कप के अंदर। पाकिस्तानी टीम तश्कील पाई इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची और ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के इश्तराक से। इसीलिए टीम को नाम दिया गया कराची कोलास का। टीम ने ये दुनिया को पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी मैदान में भी पीछे नहीं। अलबत्ता रिसर्च फंडिंग का शिकवा रहा। रिसर्च की वो फंडिंग और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही होती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। इस तरह के इंटरनेशनल विजिट्स करने हो तो उसमें रोबो कप को अटेंड करने के लिए भी फंडिंग में हमें काफ़ी हाथ पैर मारने पड़े। पाकिस्तान ने फ्रांस को हराया, जापान को मात दी, प्री क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया, मगर इंग्लैंड और पुर्तगाल ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन टीम के अरकान ने हिम्मत न हारी। अफसोस तो होता है, मगर इसमें असल में इस कंपटीशन का मकसद है कि आप रिसर्च में कितना आगे जाते हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला, दूसरी टीम से मिले, उनका सीखा कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर गैर मुल्की टीमें भी तारीफ किए बिना ना रह सकीं। Karachi Koalas here are a team who are quite new indeed. They've really not been around for very long, but they're doing exceptionally well. Oh, the Karachi Koalas, they are very, very cool. Okay, and I think already they've exceeded everyone's expectation. Just to qualify in their first year is amazing, and getting into the second round is just awesome. रोबो कप 2011 में कराची कोलास का सफर तो प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज पर खत्म हुआ, लेकिन पहली बार किसी पाकिस्तानी टीम की न सिर्फ रोबो कप में शिरकत बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुंचना भी पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, इस्तांबुल, Turkey. Right, so you saw from this small video that this was from the theoretical track, which is the simulation oriented. तो ये आपने जो देखा था स्क्रीन पे, ये रियल रोबोट्स नहीं थे, लेकिन ये स्क्रीन पे रोबोट्स जो थे वो फुटबॉल खेल रहे थे, but these were autonomous robots. ऑटोनोमस रोबोट्स का मतलब है कि इसमें उनको रिमोट कंट्रोल कोई प्लेयर्स पीछे से जैसे जॉयस्टिक से उनको कंट्रोल नहीं कर रहे थे इंडिविजुअल रोबोट्स को, बट द रोबोट्स वर देमसेल्व्स मेकिंग दिस डिसीजन कि अच्छा अब किस बॉल कहाँ पे है, उसको कहाँ पे हिट करना है। उनका पास एक गोल जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर था वो उनके अंदर एम्बेड हुआ था, यानी कि उनको पता था कि ये ऑपोजिट की टीम है, वो पहचान सकते थे ऑपोजिट टीम के रोबोट्स को, और उन्हें पता था कि ये इनका गोल इस साइड पे है, हमारा गोल इस साइड पे, हमें डिफेंड करना है अपने आप को और उनका अटैक करना है, ठीक है। तो ये सब बिहेवियर जो है ये रोबोट्स जो हैं इनके अंदर बिल्ट इन था, यानी कि ऑटोनोमस था, तो वो खुद अपना ये करते थे। तो दीज वर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट। हमारे पास इस वक्त भी ये रोबो कप लैब है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दिस ट्रैक एंड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर इट हैज बीन लेफ्ट। ये काफी पुराना हो गया अभी। हम ये मैंने जो अभी वीडियो आपको दिखाई ये 2012 की थी, 2013 में 14-15 में भी हम गए थे और उस वक्त तक हम जो है वर्ल्ड के यानी कि सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए थे। तो
उसके बाद से ये जो है हमने स्टॉप हो गया ये हमारे पास ट्रैक रिसर्च का, बिकॉज नॉट मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड, बट दिस इज अ कप जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक चल रहा है, और इसके जो है टारगेट ये है कि 2050 तक, यानी कि अब से तकरीबन 30 साल बाद, ये रियल रोबोट्स का रियल ह्यूमंस के साथ जो है ये फुटबॉल मैच होगा। तो उस वक्त तक जो है इन 30 इयर्स रोबोट्स जो हैं वो इतने एडवांस कर जाएंगे कि दे विल अपीयर जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल या स्टील की नहीं बनी हुई होगी, बट दे विल बी मेड ऑफ रबर, स्मॉल रबर, जस्ट लाइक ह्यूमंस, सो दैट इवन दे प्लेयर्स कोलाइड एटसेट्रा सो ह्यूमंस डोंट गेट हर्ट, और इसी तरह से उनमें सेम कैपेबिलिटी होगी। तो इसका टारगेट ये है कि हमने उसको विन करना है वहाँ तक, यानी कि 2050 तक जो है रोबोट्स को इतने कैपेबल बना देना है कि वो रियल ह्यूमंस के साथ प्ले कर सकें। अब जो रोबोट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत सारे दूसरे गेम्स में ह्यूमंस के साथ compete करते हैं। फॉर एग्जांपल चेस एक प्लेयर है, चेस एक गेम है जिसमें जो है रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस से compete करते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल मोशन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें अपने चेस पीसेस करने होते हैं। तो वो भी आप दोनों सिमुलेशन ट्रैक के भी थ्रू कर सकते हैं और इंजीनियरिंग ट्रैक के भी थ्रू कर सकते हैं। सिमुलेशन ट्रैक के थ्रू का मतलब है कि वो स्क्रीन पे चेस का गेम चल रहा होगा और एक मूव जो है ह्यूमन करेगा, दूसरा जो है मूव कंप्यूटर करेगा, और इंजीनियरिंग ट्रैक में एक रियल चेस बोर्ड रखा होगा टेबल के ऊपर, और एक साइड पे ह्यूमन बैठा होगा, एक साइड पे रोबोट बैठा होगा, और रोबोट जो है उठा के पीसेस को उसी तरह से मूव करेगा जैसे कि ह्यूमन कर रहा है। तो उसमें जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी, इस टाइप का ये जो है उसमें सेंसर लगे हुए होंगे रोबोट में, कैमरा से पता चलेगा कि अच्छा ह्यूमन ने कौन सी चाल चली है, उसको एनालाइज करके फिर रीजनिंग का पार्ट आएगा कि अच्छा मेरे कैम से चल रहा है, और फिर दोबारा से एक्चुएटर का पार्ट आएगा जिसमें उसने पीस को उठा के जो है मूव करना है। Let me show you video of robots playing chess in order to explain what I mean by actuator. Now in this video you can see that there are robots that are playing chess, and it's a tournament level जिसपे आप stopwatch के जो है timer होता है जो control करता है, and you can see that robots are actually picking up pieces and making their moves. तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि actuator भी शामिल है इसके अंदर, और सेंसर्स भी शामिल हैं कैमरे से, और वो जो है रियल जो बोर्ड है उसके ऊपर ये गेम जो है वो चल रहा है। All right, so coming back to my slides here. Okay, so another term that we need to understand today is called Turing test. ये एक टेस्ट है, ये जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना जरा मुश्किल होता है, तो ये मुश्किल जो है ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है। तो 1950s में एक साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग उनका नाम था, तो उन्होंने एक टेस्ट डिवाइस किया था कि किस तरह से हम पता करेंगे कि ये वाकई इंटेलिजेंट बिहेवियर है या नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिसमें कंप्यूटर जो है वो ह्यूमंस के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, और ह्यूमंस जो हैं वो कैन जस्ट इंटरेक्ट थ्रू दैट एजेंट ऑन द अदर साइड थ्रू जस्ट कीबोर्ड, यानी कि जैसे आजकल हम चैट करते हैं चैट रूम में या व्हाट्सएप पे जब हम चैट करते हैं, तो आप कोई मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और जो जवाब आ रहा है उसको आपने गेस करना है कि वो कोई ह्यूमन आपको जवाब दे रहा है या कोई मशीन या रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम कोई जो है वो आपको जवाब दे रहा है। एंड यू हैव यानी कि कोई भी बाउंड्स नहीं है कि आप किस तरह का क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। यू ह्यूमन जो है उसकी कोशिश होती है किस तरह के क्वेश्चंस करे या इस तरह की बातचीत करे कि वो पता उसे डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाए कि ये ह्यूमन ये रोबोट है। और रोबोट जो है उसकी जो है गोल जो होता है वो ये होता है कि ह्यूमंस जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये जो है आंसर जो जनरेट हो रहा है व्हाट्सएप पे ये कोई ह्यूमन जनरेट कर रहा है या ये कोई एआई सिस्टम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट जो था ये ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है कि अगर कोई सिस्टम
इस चीज में कामयाब हो जाता है कि एक ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर पाता डिफरेंस कि ये मिसाल के तौर पे आप दो लोगों के साथ एक चैट कर रहे हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स के साथ, उनमें से एक फ्रेंड रियल ह्यूमन है, दूसरा फ्रेंड जो है वो एआई सिस्टम है। और अगर जो है यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश के विच ऑफ योर फ्रेंड इज रियल ह्यूमन एंड विच ऑफ योर फ्रेंड इज अ रोबोट, देन विल से कि द रोबोट हैज पास्ड द ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि नहीं ये तो रोबोट लग रहा है, ठीक है, और ये वाला ह्यूमन है, जस्ट बाय engaging with them in conversation, then we'll say कि ये Turing test जो है वो robot pass नहीं कर सकता. So to determine just by checking whether there is a human or a computer at the other end, ये test जो है ये कहलाता है Turing test कहलाता है. और Alan Turing ने predict किया था कि by year 2000 computers will have a 30% chance of passing this test. तो अब हम 2021 में हैं, ठीक है। अभी आप देखिए कि अभी काफी जो है इम्प्रूव हो चुके हैं, although we can still very easily say tell के दूसरी साइड पे जो है कंप्यूटर है या ह्यूमन है, लेकिन काफी हद तक इन मेनी स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट जो है हमें काफी इंटेलिजेंट बिहेवियर हमें मिल जाता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है या सीरी है या अलेक्सा है, उनसे जब बात करते हैं तो काफी हद तक हमें इंटेलिजेंट आंसर हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो 30% आई डोंट नो कि 30% कितना, 30% का मतलब है कि इन वेरी सिंपल केसेस में भी 30% ऑफ द सिंपलेस्ट केसेस में भी ये कंप्यूटर आजकल जो है टेस्ट भी पास कर सकते हैं, अदरवाइज जो है दे विल नॉट बी एबल टू पास दिस। तो अभी तक तो सिचुएशन ये है, लेकिन we'll in the next few classes we will discuss this more about artificial intelligence. We will look at some more examples, and we'll look at some of the more algorithms that are used in artificial intelligence. So that's all for my side for today. Thank you very much everyone for attending the session today. And if you have any questions, I'm here and we'll be very happy to answer them. Sir, you were saying that the robots playing the game were not real. I mean, if they're not mechanical robots, then how are they playing? It's just software. Software is doing all the thinking, right? So what we see on the screen is it's not that the thinking is actually happening on the screen. The thinking is happening in the computer program, right? So उसमें actuator डिस्प्ले देयर, उसमें सिर्फ वो एक डिस्प्ले है ना सर, मतलब जी जी वो सिर्फ डिस्प्ले है, लेकिन आप उसको अगर सेपरेट कर दें रीजनिंग को फ्रॉम इट्स एक्चुअली मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जब आपने रीजनिंग कर ली कि मुझे किक करनी है, तो वो किक जो है वो रियल रोबोट भी कर सकता है फील्ड में, ठीक है, मैकेनिकल अगर पार्ट पे जा रहे हैं, लेकिन वो किक जो है वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर भी कर सकता है स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे हम लोग जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये जो आपने दिखाया था ये मतलब उसके जैसा है, ये उसके जैसा तो भी एक जी जी। तो वो लेकिन वो रिमोट कंट्रोल नहीं होते, बल्कि वो सब जो है खुद डिसाइड कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन के इस वक्त गेम क्या सिचुएशन है, बॉल कहाँ पे है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे है, बॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मुझे उसकी तरफ भाग के जाना है या नहीं, तो ये सारे जो हैं ये उसमें है। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल ट्रैक एंड सिमुलेशन ट्रैक। जैसे सिमुलेशन में आपने फ्लाइट सिमुलेशन की होगी ना, अब जब आप रियल जहाज भी चला सकते हैं या उसको सिमुलेशन में भी चला सकते हैं उसको जहाज को, तो ये something like similar. Okay. All right, thank you very much everyone. I'll see you next time. Allah Hafiz everyone.